let me have this Pima Indian occurrence. So within the same line, I'm going to copy this line here. I'm going to this one, right? Let me run this one. So what is the ingredient of this variable? Here we have sentence. So this is the entire sentence here. I want to split the words that make sense in the format of list. So what I'll do, I'll write the sentence with the split function and split with, let me run this one. Can you see? It's splitting all the keywords or the words in a separate ways, right? Can you see? This is kind of list. अभी ये paragraph नहीं है, ये sentence नहीं है. Now we have list, right? Can we store this list in some certain string? Yes. So can I go for the type of, can I check off this type variable T? Can you see? It's a kind of list. But if you check the type of this sentence, it's a string. So just now, can you see the code I'm holding here? I'm just having, initially I had created a sentence with certain random paragraph, but converted using the split function, it converted into the list. And you know there is a huge difference between a split and list, right? So for I in P, I can print iterable function also. Can you see? I'm printing all the words one by one because this I is nothing, it's an iterable word, and T is nothing, it's a set of list. It's a set of list elements. Can you see what's happening over there? We are converting a string to list, just giving a split function. In either way, you can do in different way. Let's say we inside the split function, let's say I'm giving some comma, right? And allow me to print all the comma here. Can you see? Now we have only 1, 2, 3, 4. 4 elements are here, right? Or using the same for loop, if I'm trying to print this list over the screen, I'm getting only 3 elements. Or you can check by the another function which is called len of t, you will find 4. We have only 1, 2, 3, 4. 4 elements, right? So here we go with the separating. So ये आपका केस स्टडी है कि आप उसे कॉमा के बेस पे सेपरेट करना चाहते हो या आप सिंपली स्प्लिट स्पेस के बेस पे करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं कराओगे तो वो स्पेस के बेस पे कर देगा. और कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हाइफन हो गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हाइफन है या कोई पर्टिकुलर कीवर्ड्स है उसके बेसिस पे आप, या डॉट है, आई मीन पीरियड है, such as periods are there. So in the case of period, you will have to pass period inside the split function. But you just keep remember the skeleton part of this split. In brief, this function provides insight into the conversion from string to split, right? And you know with the split you can perform all these operations, right? Okay, so for I in sentence, let me print I. Can you see? Yep. So what's the difference between means running the iteration function over the sentence and the running iteration function iteration loop over the list? Difference क्या है? Can you see? डिफरेंस ये है कि जब आप सेंटेंस के ऊपर आइटरेबल ऑपरेशन लगाते हो, सो द आइडिया केम अक्रॉस क्लियरली, वी आर गेटिंग कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन. सारे कैरेक्टर्स एक एक करके स्क्रीन पे दिखाई देना शुरू हो गए.
But in contrast, when you are running for loop over the list elements, you are obtaining respective list elements. Did you get the idea? Can you see what I'm pointing at? कि हम एक स्ट्रिंग को हम सेंटेंस में या लिस्ट में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? यूजिंग स्प्लिट फंक्शन, ताकि हम उस पे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन लगा सकें, राइट? Anyone having any idea? Any question? Sir, in list iteration initially goes with the words, no? No. In list, iteration go with the elements. Because what we are actually, can you see, if I'm going to print, let's see, if I'm going to print this one without the comma separator, delimiter. So if I'm going to print this T here, can you see, ये जो Pima, North American, these are individual element of my list. These are, did you catch the sense of it? We are not getting the single character, rather we are getting space wise. हर word अपने में अलग अलग elements, अलग element जो है लिस्ट का बन चुका है, right? Separated by comma, culture, hukum, heuristic, the, off, area. Now we are running the for loop over this. So for I in T, and then I'm going to print this I. Can you see? Now actually I'm printing the list of element of this list. इस list के सारे element I'm going to print. मैं print कर रहा हूँ. So did you follow what I'm saying? कि Yes, sir. जो सारे operations हैं वो सारे list के elements के ऊपर हो रहे हैं. This is the reason we are going to try to split. अभी ये आपको लग रहा होगा कि I'm going to illustrate why I'm emphasizing more about this split function. लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कोडर या हैकर रैंक के एग्जाम्पल देख लेते हैं. हैकर रैंक, राइट? सो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट के क्वेश्चंस अगर आप सिंपलर से स्टार्ट करना शुरू करोगे, सॉल्यूशंस, anyone have done questions from hacker rank or any other equivalent sites, जैसे कि हैकर रैंक के अलावा और भी हैं? हैकर रैंक like coder whites, right? Test gorilla. So they all are having such kind of questions for candidates. View kits, prepare dashboard. Yes, Python solvings. अगर आप इसके solving basic question पे जाते हो, तो अगर आप इसके question solve करोगे, take the test, update profile. Okay, let me log in with my credential. कंपनी आपसे पूछती है कि आपके हैकर रैंक में कितने स्टार हैं, राइट? दे आर लाइक आस्किंग कि आपके प्रिपेयर, लेट्स से आई एम गोइंग टू कंटिन्यू प्रिपरेशन. जैसे टपल्स पे ही क्वेश्चन जैसे मैंने किया, सॉल्व चैलेंज. So यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कैन यू सी वी हैव दी ऑब्जेक्टिव, लाइक क्वेश्चन है, गिवन एन इंटीजर हैशटैग बिल्डिंग इनपुट फॉर्मेट, राइट? उस फॉर्मेट के बेस पे here we have sample input, right? And here is the sample output. There should be a sample output.
So ये entire case study है. On the basis of this case study, we have this portal. So Python 3 का portal आपको दिया गया है right hand side में compiler, and you will have to submit your code. So you are like to start by writing your code here and sort this question, right? So ये जो questions हैं, ये जैसे submissions हैं, अगर आप इनके वो देखोगे submissions, leaderboard, discussions में देखोगे, तो वो ज्यादातर इस तरीके के split map function use करते हैं, right? So these all are Python codes, and we will see how map functions are working. Can you see split function? देखा आपने? यहाँ पे जो कोई भी इनपुट है उसका स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे हुआ है, राइट? लेट मी कॉपी दिस कोड, प्रिंट इट हियर. सो हमारे पास जो n है वो क्या है, इनपुट है, और उसके बेसिस पे एक इंटीजर लिस्ट को टपल को मैप करा इस इंटीजर वैल्यू के साथ में इनपुट डॉट स्प्लिट. अब इनपुट डॉट स्प्लिट क्या है, ये एक आपको पता है अभी हमने स्प्लिट फंक्शन देखा, एंटायर वैल्यू को स्प्लिट करता है डिफरेंट एलिमेंट्स में, लिस्ट के एलिमेंट्स में, राइट? सो लेट मी रन दिस कोड. जैसे मैंने लिखा 2 then 3 then 5 then 7 then 8 then 9, you see with base in that table, right? हो सकता है कुछ और वैल्यू मांगी हो, लेकिन यहाँ पर ये जो कर रहा है ये इसका स्प्लिट फंक्शन ही कर रहा है, right? Let me print this value itself. Sir, I think there is a first input will run, no? The first input first, I think only one, yeah. Maybe बिना स्पेस के लिए. अच्छा, क्या बोल रहे हो आप? फर्स्ट इनपुट? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो पहला वाला इनपुट है उसको सिर्फ एक ही चाहिए, जो फर्स्ट लाइन में n में सेव होगा ना, और फिर बाद में जो सेकंड इनपुट आएगा उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू या स्प्लिट करेगा, राइट? तो ये जो है स्प्लिट कर रहा है सेकंड वैल्यू से, राइट? I'll come with these formula, मतलब means जो एक डैशबोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, how we can go for problem solvings, problem basics. I'll come with the data structure algorithm. You can solve means meanwhile कि अगर आपको topics wise prepare, it's again solve challenge, right? It's again free of cost, nothing need to pay here also. So hacker ranks के जो ranking है और जो asterisk है वो भी आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं. You can add over here and you can write the asterisk part there, right? So here are certain so in the next session we will go with the mapping and list functions. Till now, do we have any question, any query? I'll explain this map function one more time. We had not discussed yet. So we will pick up the main idea behind this map function in the next session also. So till then, do we have any idea or any question regarding your question? One more time, I'll encourage you to solve these data chem solutions. So आप उसके tutorial करते रहिए. So do we have any question? Yes. Yes. If you want to apply for this job, actually जैसे उनके जो certification है वो we will have to means can you see my screen? Okay, so here we have to learn, and again we have tracks. So tracks में we have career tracks also, and both different tracks are there. Like career tracks में जैसे कि data scientist है, data scientist, data analyst, data programmer, Python programmer, right? Inside the single track, can you see 22 courses are here? It required 88 hours. तो पहला तो ऑब्जेक्ट ये है कि जैसे सपोज मुझे ये पाइथन प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करना है,
बिफोर अप्लाइंग दिस पाइथन प्रोग्रामर, और वो जो जॉब सजेस्ट कर रहे हैं रेलिवेंट टू दी पाइथन प्रोग्रामर, they are expecting us to finish these 17 courses first. सर प्रैक्टिस करना ही कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट कर लिया। हाँ हाँ, प्रैक्टिस कर लिया। हाँ, प्रैक्टिस कर लिया, जैसे कि मैंने सपोज इस पे क्लिक किया, और इस पे क्लिक करने के मीन्स वंस ऑल दीज कोर्सेज विल बी पॉप अप, ऑल दीज 17 कोर्सेज आर शोइंग लाइन बाय लाइन, सी ऑल कंटेंट, राइट? So I'll go, so for the continue courses I'll click for the introduction to Python. तो ये एक स्ट्रीम लाइन पे चलता है, ऐसा नहीं है कि रेंडमली आज मैंने SQL कर लिया, कल पावर बीआई कर लिया, कर वो, क्योंकि इट विल सजेस्ट दी रेस्पेक्टिव पाइथन प्रोग्रामिंग जॉब्स। जैसे ही हम ये 17 कोर्सेज फिनिश कर लेंगे, कैन यू सी दिस इज आउटलाइन। तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि एक दिन में अगर आप एक कोर्स कर लेते हो, सो हाउ मेनी डेज डू आई रिक्वायर? 17 डेज। तो 17 डेज में मैंने पाइथन प्रोग्रामर का जो करियर ट्रैक है वो फिनिश कर लिया, नॉट दी स्किल ट्रैक। स्किल ट्रैक में क्या है, अगेन दे हैव 4 कोर्सेज। स्किल ट्रैक को कंप्लीट करने से जॉब का सजेशन नहीं आएगा। दे डू नॉट प्रोवाइड जॉब सजेशंस इफ एनीवन कंप्लीट दीज स्किल ट्रैक्स। तो ये हमारी, ऑफ कोर्स ये जो कोर्सेज हैं और वहां के कोर्सेज सेम है, कॉमन है, इंटरसेक्शन है, but main point discussed during this creation part, learning part, is they will suggest job portal once we finish all these career tracks. At least data scientist का career tracks मैंने अगर complete कर लिया, so they will suggest data scientist relevant jobs to me from USA, from UK, from Canada, from India itself. करियर ट्रैक के शुरू के कुछ जो कोर्सेज हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट लेटर ऑन दे वी विल हैव टू पे, वी विल हैव टू टेक दी दिस वन सब्सक्रिप्शन पार्ट। बट बहुत सर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। लाइक मैं अभी तक क्या बता रहा हूँ कि बेटा देखो ये क्या है ना, ये देखो, ये जैसे मैं क्या बताया अभी तक मैं कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि ये जो है ये साइकिल है, ये साइकिल है, ये साइकिल चला रहे हैं, ये ऐसे चलाते हैं, वैसे चलाते हैं। एंड फॉर लास्ट 10 सेशंस आई एम क्रिएटिंग साइकिल, मैं साइकिल चला रहा हूं, मैं तो मैं ही चला रहा हूँ। स्टूडेंट को जब तक ये साइकिल नहीं मिलेगी वो उनका प्रैक्टिस नहीं होगा। सो नाउ कैंडिडेट्स कि सर आप हमें भी तो साइकिल दीजिए, आप ही साइकिल चलाए जा रहे हैं। सो द की टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन इज दिस डेटा पॉइंट इज द ग्राउंड फॉर राइडिंग दीज बाइसिकल्स। तो ये अपनी अपनी साइकिल कहाँ चलाएंगे, तो वो ये है, ग्राउंड है उसके लिए। वन फट्टी मैं समझा नहीं। अदर सजेशंस, सजेशंस आराम से वेरी वेरी क्लियर। यस, रियली गुड, right? So means like suppose we have more options: learn, workspace, certification. So certification, how many certification I have completed, and fourth option is jobs. तो जॉब्स में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सो व्यू जॉब्स में मेरे सजेशंस का ये सारा सजेशन आ गया। नाउ आई कैन अप्लाई हियर, आई कैन गो फॉर दी नेक्स्ट जॉब। ये नेक्स्ट कंपनी आ गई कार्बन डायरेक्ट की, ये नेक्स्ट कंपनी आ गई। बट ये बहुत थोड़ा सा initially हमें we will have to accomplish few certifications, we will have to pick up the main idea what exactly they are working upon. Remote in the United States, entry level, mid level, junior to senior, required experience. So this kind of jobs.
सर्टिफिकेशन जो हम कर चुके हैं वो उसके यहाँ पे दिखाई। सो जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पे डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होता है और सर्टिफिकेशन का वो जो है वो वैल्यू होता है। सर मेरा ये पेड है एक्चुअली, मेरा ये आई हैड पेड दिस वन $45, बट जैसे ही, हाँ $45 अराउंड, जैसे इनके वो निकलते रहते हैं, मतलब इनके वो क्या बोलते हैं, ऑफर्स निकलते रहते हैं, स्कॉलरशिप ऑफर्स निकलते रहते हैं कि इतना रिबेट है, इतना वो है। सो उस पे अगर कोई करता है तो काफी कंसेशन भी मिल जाता है, बट ये वर्थ है। मैंने देखा इधर उधर भागने से अच्छा किसी का यूट्यूब चैनल फॉलो करो, किसी का वर्डप्रेस पे पढ़ो या किसी के उस पे करो, आपकी खुद के नोट्स हैं यहाँ पे, यू कैन कम बैक एनी टाइम। जैसे कि मैं मैप फंक्शन इन पाइथन सर्च करता हूँ तो इवन सर यू वोंट बिलीव, मैंने अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स इससे कंप्लीट करे हैं। जैसे मैप करा, अभी मैप में मैंने पाइथन सेलेक्ट कर दिया, सो नाउ आई एम हैविंग मैप फंक्शन का सारा इलस्ट्रेशन यहाँ पे है। inside the Python, I'll select map function over here, right? So कोई भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि मैप फंक्शन कैसे होता है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, सारा कोर्सेस है, बहुत कोर्सेस है। मतलब मेरा तो पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा, नहीं कर पाऊंगा मैं। इसमें सीक्वल है, इसमें पावर बीआई है, इसमें टेब्लो है, इसमें AWS है, इसमें एज्योर है। तो आप सोचो ना, $45 में आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिल रही है पर ईयर। वर्थ है। हम इतना का पिज्जा हट में और मैकडी में ले लेते हैं, लेकिन अगर हम, मुझे इनिशियली लगा कि ये बहुत ज्यादा वर्थ है, बट जैसे ही मैंने इनरोल किया ना तो मैंने सारी वेबसाइट अपनी बंद कर दी, सब कुछ। इवन लिंक्डइन लर्निंग से भी बेटर है। लिंक्डइन लर्निंग में भी क्या है, वो अपना बस वीडियो बोल रहे हैं, हम सो रहे हैं अपने माइक पे बैठ के, हमें वो बासी आ रही है। लिंक्डइन लर्निंग में वो अपना प्रैक्टिस करने कुछ दे ही नहीं रहे। यहाँ पे वो इंगेज करके रखते हैं कि अब जैसे TNSE है तो ये ऐसा नहीं है कि इसी को एक्सप्लेन करेंगे, पहले वो वीडियो बताएंगे और फिर उसके बाद में वो उसके रेलेवेंट में कोड करने को देंगे। जैसे ये है, फिर यहाँ पे ये देखिए तुरंत ही कोड आ गया। अगर वो मैंने वीडियो सही से नहीं सुना है या वो मैंने ब्रीफ ऑफ नोट्स नहीं बनाए, हैड नॉट क्रिएटेड अर्लियर, आई कैन नॉट फिनिश दिस script.py फाइल। सो ये करने, एक बार जिसने कर लिया ना, दे विल नेवर फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट few months. So that will be click with anyone. And once we will submit the answer, we will get the daily XP. तो ऐसा daily XP कर करके मेरे 90,000 हुए हैं, क्योंकि मैं एक मुझे एक ये पूरा सारे चारों चैप्टर कम नहीं है, मतलब कि एक सर्टिफिकेट मुझे रात तक शाम तक होना चाहिए मेरे पास। तो पूरा कोविड 1 कोविड 2 कोविड 2 समझ लीजिए, पूरा कोविड 2 1 ईयर समझ लीजिए, इन दिसंबर 1 ईयर कंप्लीट होने वाला होगा। सो लेस देन 1 ईयर आई अर्न मोर देन 80,000 XP। आराम से। So you can add these certification in your LinkedIn profile also. Can you see license certification? तो Udemy में भी यही होता है कि वो लोग अपना बताते रहते हैं. So I am have 45 certification on the basis of this. Can you see all these data camp, Python toolbox, data camp intermediate, data camp introduction, statistics से तो बढ़िया मुझे कहीं दिखा ही नहीं. Feature engineering, NLP, and then basics of Java, certification, hacker rank, सारे जो सर्टिफिकेशन है मेरे इसी पे एक्वायर करे हुए हैं. So you can, I mean, candidate can show these certificates at the time of interview also. Okay. Yeah, sure. In a nutshell, this session highlighted all about the split function. We will more focus on a split function in the upcoming sessions also when we pick up the hacker rank questions. I'll come up with the Python.
टिल देन आप लोग का होमवर्क ये है कि जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, लाइक एवरी कोर्स का फर्स्ट चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कैन यू सी फ्री? अगर यहाँ पे पाइथन के 100 चैप्टर्स हैं, 100 कोर्सेस हैं, मोर देन 200, अगर सपोज मैं पाइथन सर्च करता हूँ, सो पाइथन के कैन यू सी एट द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव कोर्सेस 167। तो 167 के फर्स्ट सम जो चैप्टर है वो फ्रीली अवेलेबल है। तो एटलीस्ट आप पे करने से पहले 167 चैप्टर तो फिनिश कर लो। So did you figure it out? Once you have figured it out, you can go for the subscription as well. But at least as of now, you can accomplish these first chapters of each 167 courses. उसमें ही आपका जो है इंटरव्यू क्लिक हो जाएगा और एक्सपी आपके 10,000 से पार चले जाएंगे। और जैसे ही आपके एक्सपी बढ़ते हैं ना, आपका कोर्सेस अनब्लॉक होते, मतलब वो होते रहते हैं, मतलब कि ओपन होते रहते हैं। कैन यू सी? हाँ, इसमें ऑप्शन था कि जैसे ही एक्सपी हमें मिलते रहते हैं वैसे ही कोर्सेज भी ओपन होते रहते हैं। ओके, सो डू वी हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? इफ नो, आई थिंक वी शुड स्टॉप प्रेजेंटिंग। थैंक यू। ओके, हैव अ गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Good night, sir.